I've been to Goa at least 7 to 8 times, but every Goa trip seemed the same. बागा या कालंगूट में पार्टी करना, वही बीचेस घूमना. So this time around, I came all the way to South Goa to witness the lesser known places and explore the real beauty of this tropical paradise. So for the first 2 days we stayed at Agonda Beach and सुबह सुबह 6 बजे उठ के हम निकल गए कोला बीच के लिए to try the kayaking there. सो कोला बीच की जो अप्रोच रोड है वो एक्चुअली काफ़ी कच्ची रोड है. इट्स ऑल मिट्टी एंड पत्थर. सो द राइड इज़ गोइंग टू बी वेरी बम्पी एंड ऑल्सो इंश्योर कि आप मैप्स डाउनलोड करके जाओ बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आपका नेटवर्क ना आए. बट ट्रस्ट मी द राइड इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट बिकॉज वेट एंड वॉच वॉट द व्यू वुड बी. सुबह सुबह ये नज़ारा देख के मेरी सारी थकावट दूर हो गई. है ना व्यू वर्थ इट? सो दिस इज़ द कोला बीच क्लिफ पॉइंट. सो क्लिफ पॉइंट एंजॉय कर लिया. अब हम थोड़ा सा हाइक डाउन करके जा रहे हैं कोला बीच की तरफ. सो लेट्स सी. सो क्लिफ से बीच तक जाने के लिए एक्चुअली प्रॉपर स्टेयर्स बनी हुई हैं विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. So the hike isn't going to be as hard as I thought it would be. नीचे जाके स्टेयर्स थोड़ी नैरो हो जाती हैं but oh my god, the view from here, just wow. I've realized कि the best way to explore Goa is to wake up early and just hit the destinations that you want to explore. I mean, just look at the crowd right now. Exactly, there's no crowd. We woke up at 6 a.m. and reached Kola around 7 a.m. and just look at how peaceful it is. So Kola is one of the few places in India जहाँ पर beach and backwaters दोनों हैं. And kayaking is really famous in these backwaters, so let's do it. Kayaking in this lagoon felt so peaceful and surprisingly the water was very clear and super cold. तो अभी मैं हूँ प्रजोत सर के साथ जिनकी कयाक हमने ली थी और कोला बीच के लगून में हमने कयाकिंग करी थी. ये हमारा कोला बीच का फेमस बीच है और ये बैक वाटर लगून है, स्वीट वाटर है और चार्जेस तो हमारा पर पर्सन 200 रहता है. और आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो उससे ऐसा ही निवेदन है कि आप कोला में आओ, एंजॉय करो, बैक वाटर पे कायाकिंग करो और मेरे पास आ जाओ. मेरा नाम प्रजोत है और सर ने हमारी बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाई हैं. तो ये कयाक ओनर के साथ साथ बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं. थैंक यू. तो भाई कयाकिंग जैसी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करके हमें तो लग गई थी ज़ोरों की भूख. एंड लकीली देयर इज़ अ प्लेस राइट अक्रॉस द लगून कॉल्ड ब्लू लगून. The vibe is very nice. Proper shack बना हुआ है which overlooks both the lagoon and the beach. So this is the freshwater lagoon of Kola, and here it forms a tiny stream to go and meet the salty water of Kola Beach. Isn't it beautiful? So since Kola Beach पे ज़्यादा shacks नहीं and this is one of the only few places, the prices are a little on the higher side, but well, the view makes it worth it.
We had come to Kola early in the morning. We had our breakfast here. So Gunjan ordered their standard English breakfast जिसमें bread, omelette, butter, jam and orange juice था. And I ordered their Nutella banana pancake. And हमारा total bill around 600 आया था. अच्छा, sorry for the ज्ञान in between, but I just want to take a moment and say, as travelers and tourists, ये हमारी ड्यूटी है कि हम गोवा साफ़ रखें. अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स हैं या रैपर्स हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने बैग में डाल लो या डस्टबिन में डाल लो, बट डू नॉट लिटर द बीचेस लाइक दिस. कोला में अच्छे से टाइम स्पेंड करके हम आ गए वापस अपने स्टे विच वॉज ऑरेंज स्काई एट अगोंडा बीच. गोवा में बेस्ट चीज़ यही है दोपहर में कि आप अपने रिजॉर्ट में चिल करो बिकॉज काफ़ी गर्मी होती है. ईट योर लंच एंड गेट रिफ्यूल्ड फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन द इवनिंग. एंड दिस इज़ वॉट आर डिलिशियस सी फूड लंच लुक लाइक. सो शाम के 4 बजते ही मौसम होने लगता है थोड़ा अच्छा, विच मीन्स इट्स टाइम टू हिट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो नेक्स्ट वी वर गोइंग टू काबो डे रामा विच इज़ नोन फॉर इट्स सनसेट व्यूज़. अगोंडा से काबो डे रामा की राइड काफ़ी अपहिल थी एंड इट टुक अस अराउंड 30 मिनट्स टू रीच आवर डेस्टिनेशन. सनसेट का व्यू तो यहाँ से बहुत सुंदर था, बट दिस प्लेस इज़ सो ओवर हाइप्ड. यहाँ पर लिटरली लोगों की लाइन लगी हुई थी जस्ट टू क्लिक सम पिक्चर्स. एक्चुअली यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है कॉल्ड द केप गोवा जो कि इंस्टाग्राम की वजह से काफ़ी फेमस हो गया है, बट ऑनेस्टली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है. एंड आई प्रेफर थोड़ी पीसफुल जगहें, सो वी थॉट कि यहाँ से निकलने में ही हमारी भलाई है. Instead, we rode all the way back to Palolem Beach, which took us around 40 minutes, but we reached just in time to witness this beautiful sunset. If you've seen my other videos, you will already know that I love finding restaurants which are hidden gems. I also love Italian food and इसीलिए हमने खोजा ये restaurant called La Fetta and यहाँ की vibe was just so chilled. And not just the vibe, the food here was absolutely delicious and authentic Italian. After an eventful day, it was time to head back to our stay to get decked up for the next day. आज के लिए इतना ही. I'll be back with the part 2 of this South Goa vlog. Till then, stay tuned and thanks for watching.